Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here on a nursing file. Today in this video we are going to learn about the hepatitis nursing care plan, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हेपेटाइटिस का नर्सिंग केयर प्लान, जहाँ पर हमने यहाँ डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन के थ्रू यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान को यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स नर्सिंग केयर प्लान ऑन हेपेटाइटिस। नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं यहाँ पर। व्हाट इज हेपेटाइटिस? यार हेपेटाइटिस रेफर टू एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर। The five main viral classification of hepatitis are hepatitis A, B, C, D, and D. Common symptom of infectious hepatitis include the fatigue, flu-like symptoms, dark urine, pale stool, abdominal pain, loss of appetite, unexplained weight loss, yellow skin and eyes, which may be signs of jaundice. Next देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। यहाँ पर फर्स्ट केयर प्लान होगा यहाँ पर इम्बेलेंस न्यूट्रिशन। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा। हेयर पेशेंट सेज दैट आई एम हैविंग लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ईटिंग, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हेयर मॉनिटर सीरम ग्लूकोज, मॉनिटर डाइटरी इनटेक एंड कैलोरी काउंट, मॉनिटर वेट. After these assessment, we write here the nursing diagnosis, that is imbalanced nutrition, less than body requirement, may be related to insufficient intake to meet metabolic demands, anorexia, nausea and vomiting. गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट होगा यहाँ पर प्लानिंग में एनकरेज माउथ केयर बिफोर मील। इसका रेशनल होगा मीन्स स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन। रेशनल होगा एनहेंस एपेटाइट बाई एलिमिनेटिंग अनप्लीजेंट टेस्ट। इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज फॉर माउथ केयर बिफोर मील। सेकंड देखते हैं यहाँ पर सेकंड इंटरवेंशन होगा एडवाइज पेशेंट टू ईटिंग इन एन अपराइट पोजिशन। रेशनल होगा रिड्यूस द सेंसेशन ऑफ एब्डोमिनल फुलनेस एंड मे एनहेंस इनटेक। इम्प्लीमेंटेशन होगा एडवाइज पेशेंट अबाउट अपराइट पोजिशन। नंबर थर्ड देखते हैं एनकरेज द इनटेक ऑफ फ्रूट जूस। रेशनल होगा दीज सप्लाइज एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड मे बी मोर इजीली डाइजेस्टेड और टॉलरेटेड देन अदर फूड। इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज्ड फॉर इनटेक ऑफ फ्रूट जूस। नंबर फोर्थ देखते हैं कंसल्ट विद द डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टीम टू प्रोवाइड ए डाइट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। रेशनल होगा यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एन डाइटरी प्रोग्राम टू मीट इंडिविजुअल नीड। इम्प्लीमेंटेशन होगा कंसल्टेड विद डाइटिशियन। नंबर फिफ्थ एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज इंडिकेटेड, एंटीएमेटिक्स, मेट्रोक्लोप्रामाइड, एंटासिड्स, विटामिन बी complex, vitamin C and other dietary supplements. Rational होगा reduce nausea and vomiting, antiemetics and acids reduce gastric irritation and other supplements correct diet efficiency and aid in the healing process. Implementation होगा administer medication as prescribed. Number 6 intervention होगा provide supplemental feedings and total parental nutrition if needed. Rational होगा may be necessary to meet caloric requirement. Implementation होगा provided supplemental feeding. After providing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan. Number first here, तो ये देखते हैं evaluation में हमको क्या लिखना है। यहाँ पर evaluation में लिखना है नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन। गोल तो हमारा टू मेंटेन नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस, वो हमने
अचीव्ड किया है, जो भी इंटरवेंशन हमने यहाँ पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं, और उसको यहाँ इवेल्यूशन रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड फॉर हेपेटाइटिस। केयर प्लान नंबर सेकंड होगा यहाँ पर रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। नेक्स्ट नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। Here first monitor intake and output and compared with periodic weight, not antic losses, vomiting and diarrhea. Assess vital sign, peripheral pulses, capillary refill, skin turgor and mucous membrane. Number 4, observe for sign of bleeding, hematuria, melena, ecchymosis, oozing from gums, puncture sites. नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा risk for deficient fluid volume may be related to excessive loss through the vomiting and diarrhea. गोल होगा to maintain normal fluid volume. नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग, रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन, प्लानिंग और इंटरवेंशन। फर्स्ट में यहाँ पर यूज स्मॉल गॉज निडल फॉर इंजेक्शन, अप्लाई प्रेशर फॉर लॉन्गर देन यूजुअल आफ्टर वेनिपंचर। रेशनल होगा reduces the possibility of bleeding into tissue. Implementation होगा use small gauze needed for IV and injection. Number second intervention, have the patient use cotton or sponge swab and mouthwash instead of a toothbrush or use a soft bristle toothbrush. Rational होगा avoid trauma and bleeding of gums. Implementation का use soft toothbrush. Number थर्ड देखते हैं यहाँ पर provide IV fluids, usually glucose and electrolytes, protein hydrolysate. Rational होगा provide fluid and electrolyte replacement in an acute toxic state. Implementation होगा provided IV fluids. Number 4, infuse fresh frozen plasma as indicated. Rational होगा may be required to replace clotting factors in the presence of coagulation defect. Implementation होगा infuse fresh frozen plasma. Number 5 intervention होगा administer medication as indicated, vitamin K antacids or as2 receptor antagonist, cimetidine, tagamet. Rational होगा vitamin K supplementation may prevent coagulation problem, antacids neutralize and reduce gastric secretions to lower the risk of gastric irritation and bleeding. Implementation होगा administered medications. After providing these interventions, we rated the evaluation steps for this care plan. तो यहाँ देखते हैं evaluation में केयर प्लान नंबर सेकंड का evaluation होगा यहाँ पर मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम। जो हमारा गोल था टू मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम वो हमने अचीव किया है, जो डिफरेंट इंटरवेंशंस पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं, और उसको यहाँ पर हम इवेल्यूशन में लिखते हैं लास्ट में कि गोल अचीव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ हमारा गोल है वो अचीव हुआ है, तो यहाँ हमको लिखना है मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम। तो ये था सेकंड केयर प्लान। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। तो ये देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में subjective data are not applicable because this is risk diagnosis and objective data. Observe skin for area of redness and breakdown. Nursing diagnosis देखते हैं risk for impaired skin integrity may be related to bile salt accumulation in the tissue. गोल होगा to maintain skin integrity. Planning और intervention. नेक्स्ट रेशनल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। फर्स्ट इंटरवेंशन होगा एनकरेज द यूज ऑफ कूल शॉवर एंड बेकिंग सोडा और स्टार्च बाथ, अवॉइड द यूज ऑफ एल्कलाइन सोप, अप्लाई कैलेमाइन लोशन एज इंडिकेटेड। रेशनल होगा प्रिवेंट्स एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ द स्किन, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम ईचिंग। इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज फॉर कूल शॉवर्स। नंबर सेकंड, provide diversional activities. Rational होगा aids in refocusing attention, reducing the tendency to scratch. Rational होगा implementation होगा provided diversional activity. नंबर थर्ड देखते हैं
Suggest the use of conkles if the desire to scratch is uncontrollable. Keep fingernail cut short and apply gloves on the comatose patient or during hours of sleep. Recommended loose fitting clothes. Provide soft cotton linen. रेशनल होगा reduce potential for dermal injury. Implementation होगा suggested the use of conkles. Number 4, provide soothing massage at bedtime. Rational yoga may be helpful in promoting sleep by reducing skin irritation. Implementation yoga provided a soothing massage at bedtime. Number 5, avoid comments regarding the patient's appearance. Rational yoga minimizes psychological stress associated with the skin changes. Implementation yoga avoided comments. Number 6, administer medication as indicated. Example, antihistamines reason होगा relieve itching और implementation होगा administered medication. After providing these interventions, we write the evaluation steps of this care plan. तो यहाँ evaluation होगा skin integrity maintained. जो हमारा गोल था टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी वो हमने अचीव किया बाई दीज इंटरवेंशन जो हमने यहाँ पर पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं. तो ये था केयर प्लान नंबर 3. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 4. केयर प्लान नंबर 4 होगा फैटिग. इसमें देखते हैं फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट स्टेप में सब्जेक्टिव डेटा. Patient verbalize about lack of energy and objective criteria. Assess the general condition of the patient and monitor for recurrence of the anorexia and liver tenderness or enlargement. Monitor serial liver enzyme levels. Nursing diagnosis होगा fatigue may be related to decreased metabolic production and goal to reduce fatigue. Planning rational implementation देखते हैं. First देखते हैं यहाँ पर इंटरवेंशन इंस्टीट्यूट बेड और chair rest and provide a quiet environment. Limit visitors as needed. Rational होगा promotes rest and relaxation. Implementation होगा provided a quiet environment. Number 2 intervention देखते हैं. Recommend changing position frequently. Provide and instruct caregiver in good skin care. Rational होगा promote optimal respiratory function and minimizes pressure area to reduce the risk of tissue breakdown. Implementation होगा recommended for changing position frequently. Number 3, do necessary tasks quickly and at home at one time as tolerated. Rational yoga allows for extended periods of uninterrupted rest. Implementation होगा advised for doing necessary tasks. Number 4, determine and prioritize role responsibility. Rational yoga promote problem solving of the most pressing needs of individual and families. Implementation होगा determine role. Number 5, identify energy conserving technique. Rational होगा help minimize fatigue. Implementation होगा identified energy conserving technique. Number 6, increase activity as tolerated and demonstrate passive or active range of motion exercises. Rational होगा prolonged bed rest can be debilitating. This can be offset by limited activity alternating with rest period. Rational होगा implementation होगा increase activity as tolerated. Number 7, encourage the use of stress management technique, progressive relaxation, visualization and guided imaginary. Discuss appropriate diversional activity, radio, TV reading. Rational होगा promotes relaxation and conserve energy, redirects attention and may enhance coping. Implementation होगा the use of stress management technique. Number 8, administer medication as indicated, sedatives and anti-anxiety agents, diazepam, Valium and lorazepam. Rational होगा assist in managing required rest. Implementation होगा administer medications. After providing these interventions, we write here the evaluation steps. Here evaluation होगा care plan number 4 का
फटीग रिड्यूस, जो हमारा गोल था टू रिड्यूस फटीग, वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन, और उसको हम यहाँ इवेल्यूशन में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5। केयर प्लान नंबर 5 होगा यहाँ पर सिचुएशनल रोल सेल्फ एस्टीम। तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा यार पेशेंट verbalize about feeling of helplessness and change in lifestyle number। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर assess impact of illness on economic factors of patient और and significant other। नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं यहाँ पर सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम में भी रिलेटेड टू डिबिलिटिंग सिम्टम्स एंड लेंथ ऑफ इलनेस। गोल होगा द क्लाइंट विल एक्नोलेज सेल्फ एज वर्थ वाइल प्लानिंग रेशनल इम्प्लीमेंट देखते हैं। फर्स्ट encourage discussion of the feeling concern रेशनल होगा establish time enhance trusting relationship implementation होगा encourage for feeling discussion। number second intervention avoid making moral judgments regarding lifestyle रेशनल होगा judgments from other will further damage self esteem रेशनल होगा avoided making moral judgment। number third discuss recovery expectations रेशनल होगा नीड फॉर प्लानिंग सपोर्ट एंड फॉलोअप। इम्प्लीमेंटेशन होगा डिस्कस्ड रिकवरी एक्सपेक्टेशन। नंबर 4 ऑफर डाइवर्सनल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल रेशनल होगा एनेबल पेशेंट टू यूज टाइम एंड एनर्जी इन कंस्ट्रक्टिव वे दैट एनहांस सेल्फ एस्टीम एंड मिनिमाइज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑफर डाइवर्सनल एक्टिविटी। नंबर 5 make appropriate referral for help as needed case manager discharge planner social service and or other community agencies। rational होगा can facilitate problem solving। implementation होगा implemented for this intervention। after providing these interventions we rated the evaluation steps। तो देखते हैं यहाँ पर evaluation now client acknowledge self as worthwhile। तो ये था केयर प्लान नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 6 होगा यहाँ पर रिस्क फॉर इन्फेक्शन, जिसमें फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट में नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया असेस द वाइटल साइन। नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं रिस्क फॉर इन्फेक्शन में भी रिलेटेड टू इनएडिक्वेट सेकेंडरी डिफेंसेस गोल होगा टू रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन। प्लानिंग रेशनल एवेल्यूशन प्लानिंग रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट एस्टेब्लिश आइसोलेशन टेक्निक्स एनकरेज और मॉडल इफेक्टिव हैंड वॉशिंग रेशनल होगा प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ वायरल डिजीज टू अदर थ्रू थॉरो हैंड वॉशिंग इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वायरस ट्रांसमिशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा एस्टेब्लिश आइसोलेशन टेक्निक। नंबर सेकंड स्ट्रेस नीड टू मॉनिटर एंड रेस्ट्रिक्ट विजिटर्स एज इंडिकेटेड रेशनल होगा patient exposure to infectious process especially respiratory potentiate a risk of secondary complications। implementation होगा visitors restricted। number third explain isolation procedure to patient and significant other rational होगा understanding reason for safeguard themselves and other can lessen feeling of isolation। implementation होगा explained isolation precaution। number fourth give information regarding availability of gamma globulin, ISG, BIG, HB vaccine। रेशनल होगा immunoglobulin may be effective in preventing viral hepatitis। implementation होगा information given। number 5 administer medication as indicated antiviral drugs or antibiotics here useful in treating chronic active hepatitis and antibiotic to prevent and limit secondary infection। implementation होगा administered medications। after providing these interventions we rated the evaluation steps for this care plan। here evaluation होगा risk for infection reduce goal to reduce risk for infection हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किया है और उसको यहाँ हम एवेल्यूशन में लिखेंगे। तो ये था केयर प्लान नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 7। नंबर 7 तो यहाँ पर डेफिशिएंट नॉलेज देखते हैं। पर फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट आस्किंग अबाउट हेपेटाइटिस एंड रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा असेस द
level of understanding of the disease process, expectations, and prognosis, possible treatment options. नर्सिंग डायग्नोस होगा डेफिशिएंट नॉलेज में भी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मिसइंटरप्रिटेशन, गोल होगा टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग इंटरवेंशन, सॉरी प्लानिंग रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेपेटाइटिस रिस्क होगा नीड एंड रिकमेंडेशन vary with type of hepatitis, causative agents and individual situation. Implementation होगा provided specific information. बस second intervention देखते हैं plan resumption of activities as tolerated with adequate rest period. Rational होगा importance of continue adequate rest is preventing relapse or recurrence. Implementation होगा discuss about the intervention. Number third देखते हैं help patient identify appropriate diversional activity, rational होगा enjoyable activity, promote rest and help patient avoid focusing on prolonged convulsions. Implementation होगा identify appropriate diversional activity. Number fourth, encourage continuation of the balanced diet, rational होगा promotes general well-being and enhance energy for healing process and tissue regeneration. Rational होगा implementation होगा encourage continuation of the balanced diet. Number fifth, identify way to maintain usual bowel function, adequate intake of fluid and dietary phase, moderate activity and exercise to tolerance. Rational होगा decrease level of activity, change in food and fluid intake and slowed bowel motility may result in constipation. Implementation होगा identifies way to maintain usual bowel function. Number 6, emphasize importance of follow physical examination and laboratory evaluation. Rational होगा disease process may take several months to resolve. Implementation होगा emphasize importance of follow up. After providing these interventions, we write here the evaluation. देखते हैं तो यहाँ evaluation में तो evaluation होगा improved level of knowledge. जो गोल था टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज वो हमने अचीव किया भाई दीज इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड किए और उसको हम यहाँ पर एवेल्यूशन में लिखेंगे। तो ये था केयर प्लान नंबर 7 डेफिशिएंट नॉलेज। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने यहाँ हेपेटाइटिस का नर्सिंग केयर प्लान लर्न किया। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल या आनंद नर्सिंग फाइल and press bell icon also. Thank you.